हेलो। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक हमर देखिवा। नेक्स्ट टॉपिक हमर होची डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें कौन देखिवा? हमें देखिवा व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज डिग्री, देन व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन केमती सॉल्व करिवा तो डिफरेंट मेथड्स हम देखिवा। फर्स्ट हमें देखिवा किछटा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भितर हमें निहाते देखिवा जे केवया भाबरे हम डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर परियो। फर्स्ट concept is our order and degree. Order of differential equation. Order of differential equation is the order of the highest derivative with which occurs. Example example is something like if differential equation is given such as dqy upon dx cube is equal to 4y. This type of is given or something like this. So here, and also it is also given dq to the power 4 is equal to 4y plus 3x. এই টাইপର ଯଦି କିଛି ଦେଇଛି ତ ଆମେ କହିବା ଅର୍ଡର କଣ? ଅର୍ଡର ହଉଛି 3। 3 କାହିଁକି? ହାଇଏଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଡେରିଭେଟିଭ କଣ ଅଛି ଏଠି? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अछि अप टू थर्ड ऑर्डर dqy upon dx cube. That implies मु कहबे जे हमर ऑर्डर होची 3। डिग्री of differential equation which can be written as a polynomial in the derivatives. Differential equation को हमें polynomial of derivatives type रे लिखिवा and is the degree of the highest order derivative. Degree of the highest order derivative. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एठी केते dqy upon dx। तो डिग्री केते हो? तार डिग्री केते अछि 4। तो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4। आ गोटे एग्जांपल जदी बे देबी d square y upon dx square plus dy divided by dx रो square is equal to 4x square। এই টাইপের যদি কিছু ইকুয়েশন দিয়েছি তো व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द degree of the highest order derivative। degree of the highest order derivative। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन अक्योर करछि? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होछि 2। तो ऑर्डर हला 2 d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तार डिग्री केते? तार डिग्री हला 1। तार डिग्री हला 1। तो मोर डिफरेंशियल इक्वेशन रो डिग्री कौन हबो? 1 नहीं कि 2। 2 नो 2 इज हाईएस्ट डिग्री बट हमको दरकार डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन रो डिग्री केते हबो? आर डिग्री हबो 1। तो दिस इज ऑर्डर एंड डिग्री। तो दिस टाइप एबे हमें देखिबा किछटा थिंग्स लाइक one is called general solution and one is called particular solution. Actually, our differential equation ta hame kahar bane to? Differential equation is formed from a primitive। primitive को गोटे function ଦେଇଥିବ something like x minus k square plus y square equal to r square। এটা ଗୋଟେ primitive। y equal to a to the power x plus b to the power 2x plus c to the power 3x किंबा y equal to e to the power x a cos x b sin x। These are called primitives। आर corresponding differential equation ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର କିଛିଟା ଆସିବ constant term ଆଉ order କେତେ ହବ? order କେମିତି? ଆମକୁ differential equation ରେ କୌଣସି constant term ଦରକାର ନାହିଁ। like x minus k plus y square is equal to r square। तो एठी हमर means constant term टा किए? constant term is k। r is not। r हमको दरकार अछि कि r हमर होची त रेडियस। दिस इज अ सर्कल। हमको k को हटेवार अछि तो k को हटेया पय हमको जस्ट गोटे डेरिवेटिव दरकार। दैट्स व्हाई इट इज ओनली dy by dx फर्स्ट ऑर्डर। y equal to a e to the power x plus b e to the power 2x plus c e to the power 3x जते अछि हम पाखरे तीनटा अछि वेरिएबल a b c। तो हमको तीनटा को हटेवार अछि। एबे हमको थर्ड ऑर्डर पद
That's why ଆମେ ଯାଉଛେ up to d cube y upon dx cube. Similarly ଏଠି a ଆଉ b ଦିଟା unknown ଅଛି. That's why we go to d square y upon dx square. ତ ଆମ ଏଇଟା କଣ ଅଛି? Order of the differential equation of a primitive is equal to the number of essential arbitrary constant in the primitive. Arbitrary constant like एठी अछि a b c or एठी a और b. एठी जेतरा arbitrary constant हो essential. What is essential? एठी r square is not a essential arbitrary constant. R square is not arbitrary. R square is the radius of the circle. So हमको जेतरा arbitrary constant ଦେଇଥିବ ସେତିକିଟା order ହବ ଆମ differential equation. ଆଉ ଯେତେ ମୁଁ ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ reverse direction means differential equation ରୁ primitive ଗୋଟେ differential equation ଯେତେ ମୁଁ solve କରିବି ତ ମତେ ଗୋଟେ function ମିଳିବ obviously differential equation solve କଲେ ମତେ ଗୋଟେ function ମିଳିବ ତ ସେ function ର ମୁଁ କଣ that is also called a primitive ତ ଯେତେ ମୁଁ differential equation କୁ solve କରିବି suppose ମତେ ଏଇ type ର ଗୋଟେ function ମିଳିଲା ମୋର equation ମତେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା question ରେ ମୁଁ solve କଲା ପରେ ଏଇଟା ମିଳିଲା so these are called general solutions. Means arbitrary constant with constant. These are called general solution. These are called general solutions. So general solution. ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଣ କହିଲି particular solution. Suppose question ରେ କହିଲା କି means means something information question ରେ ଏମିତି ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ସେ information କୁ use କରିକି a b ଆଉ c ର particular value calculate କରିପାରିବା suppose but equation ରେ information ଦେଇଥିବ କି y of 2 is equal to 4 y of 0 is equal to 3 ତ equation ର particular value ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା suppose a b c 1 2 3 ତ ମୋର ଯଦି solution e to the power x plus e to the power 2x plus e to the power 3x e to the power x plus e to the power 2x plus e to the power 3x. So this is a particular solution. ଗୋଟେ କିଛିଟା ମତେ boundary constant ଦେଇଛି ତାକୁ use କରିକି ମୁଁ କାଢିଲି particular solution. ତ general solution ଆଉ particular solution ର difference ଏବେ ବୁଝା ପଡିଯାଇଥିବ. General solution ରେ କଣ କହୁଛି ନା general solution of a differential equation will contain as many arbitrary constant as the order of the equation. ଯେମିତି ଆମେ similar these two concepts are equivalent. Equivalent କେମିତି primitive ରେ ଯେତେଟା arbitrary constant ଥିବ differential equation ର order ସେତେ differential equation ର order ଯେତିକି ହେଇଥିବ primitive ରେ ସେତିକି constant ରହିବ ତ these two are equivalent ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି these are very simple next main ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି different solving method ଆମେ 4 to 5 solving methods ଏବେ ଦେଖିବା different type of differential equation ଥିଲେ how to solve the differential equations the first method is variable separable. What do you mean by variable separable? Variable separable ରୁ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝୁ କି suppose equation हमको देगा something function of x dx plus function of xy and dy is equal to 0 we can separate माने ଆମେ x ର term ଆଉ y ର term को अलग अलग कर परिबो something like जदि मैं example देबी like if I have something like this x y e to the power x plus y dy by dx is equal to 4 এই টাইপের যদি কিছু যদি ইকুয়েশন দেলা we can separate we have to and we can concept called separate the terms of x and y we have to separate the terms of x and y एठी केमती सेपरेट करिवा एटा को जदी हम देखिवा इट कैन बी सेपरेबल सपोज dx को मैं एपोर्ट साइड को नेमी जदी तो मु पाइबी e to the power minus x 4 e to the power minus x divided by x dx is equal to y e to the power y dy एबे मु बोथ साइड रे इंटीग्रेशन करिकी सॉल्यूशन पाई परिबी इंटीग्रेशन केमती हबो एटा मु पर डिस्कस इंटीग्रेशन केमती हबो बट ए जिंसटा जे मु अबे बोथ साइड इंटीग्रेट करिकी
मोर सॉल्यूशन पाई पारि। So this is called variable separable. We can separate the variables and just do the integration. Variable separate करके हमें integrate कर पारे x गोटे साइड आस जिवो सब x टर्म गोटे साइड रे आस जिवो सब y टर्म गोटे साइड रे आस जिवो तो these are generally explicit function को हमें variable separate करके कर पारिबा. This is called variable separable. Next thing is homogeneous equation. What do you mean by homogeneous equation? Homogeneous equation hochi definition hochi, this is the definition. Just means you can remember, you have to remember this, means you have to know what is a homogeneous function is. Homogeneous function kaha kaiba hame, a function f of xy is called homogeneous of degree n if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda to the power n f of x comma y. सिंपल भाषा रे जदी बुझिया पई जीवा हमें कांस्टेंट टर्म आसु नथिबो कि कांस्टेंट टर्म जदी आसी होला तो कांस्टेंट टर्म आसले हमर से स्केलिंग होबनी. सपोज हम डिग्री 4 रो होमोजेनियस अछि तो मो x को लैम्बडा x रे रिप्लेस करले मो फंक्शन रो वैल्यू लैम्बडा टू द पावर 4 रे बढ़िबो लैम्बडा टू द पावर n. तो कांस्टेंट टर्म जदी आसीबो सेमिति स्केलिंग होबनी. तो सिंपल एग्जांपल जदी हम देखिबा कि f of xy is equal to x to the power 4 plus x cube y. This is homogeneous. Homogeneous काहे कि जदी हमें लैम्बडा करिबा जदी हमें लैम्बडा मल्टीप्लाई करिबा तो हमें जस्ट लैम्बडा टू द पावर 4 into same term x to the power 4 plus a पाइबा. तो these are homogeneous. एबे homogeneous differential equation कोन? Homogeneous differential equation होची some function of xy m dx plus n dy is equal to 0 is called homogeneous if m and n are homogeneous and of the same degree. Same degree माने कोन? Homogeneous degree हमें देखले this is homogeneous of degree 4 x square plus xy. If I take x square plus xy, x square plus 2xy plus y square, suppose something like this. This is homogeneous of degree 2. So suppose this is m and this is n. N is what? N is simply xy. So this is also homogeneous of degree 2. So it is solved kariyo. This type of questions can be solved. Means in by this method there can be other method which can be solved. But if I do जदि मैं n equal to xy square कर देली, this is homogeneous of degree 2 but this is homogeneous of degree 3. तो এই মেথড রে সলভ করি হবনি. এটা মেথডটা কোন আমକୁ କରିବା ଅଛି ଗୋଟେ substitution বা transformation. Transformation কোন y is equal to vx. We have to use y equal to vx. माने इक्वेशन रो सब जगह रे y को मु पुट करिवि vx. तो मो पाखरे v आ x रे डिफरेंशियल इक्वेशन आ जिवो आ सॉल्व करले मु देखि परिबि जे से माने गोटे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म रे आ जिवे. y equal to vx ले ऑब्वियसली कोन हो dy को कोन लिख परबी dy is equal to v dx plus x dv. यदि y equal to vx v dy is equal to v dx plus x dv. तो एटा जदि मु रिप्लेस करके देखिबी मो इक्वेशन रे तो मु देखिबी जे इक्वेशन ता वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म रे आ जिवो. आमे आरो एग्जांपल भी देखिबा आगु को जे हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस इक्वेशन. तो एबे मेन जिंस होची सब इक्वेशन होमोजेनियस नुहे. We have some non homogeneous quantity also, like suppose first degree non homogeneous अछि तार गोटे स्पेशल मेथड अछि. Like if we are given suppose a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2, हमको गोटे c1 देतला आ गोटे c2 देतला. आकु होमोजेनियस बनेवा पय हमको कोन दरकार? यदि मु सिंपल भाषा रे कहबी आकु होमोजेनियस बनेवा पय मते कोन दरकार? ऑब्वियसली होमोजेनियस बनेवा पय मते c1 और c2 को रिमूव करियार अछि. सिंपल. होमोजेनियस बनेवा पय मते रिमूव करियार अछि c1 और c2. तो आर डिफरेंट केसेस अछि. Case 1, suppose this is not there. A1 by A2 not equal to B1 by B2. माने हला intersecting line, parallel line नुहे कि ये line.
इंटरसेक्टिंग लाइन दुईटा इंटरसेक्टिंग लाइन अच्छी मते कौन करियार अछि C1 और C2 को रिमूव करियार अछि तो आर जनरल तरीका होची मींस एटा गोटे बहुत बड़ मींस एते बड़ नुहे सिंपल तरीका जदि मु कहबी इंट्यूशन कोन मते C1 रिमूव करिया पय अछि माने एठी किछि कांस्टेंट आनिया पय पडिवो माइनस रे एठी किछि कांस्टेंट आनिया पय पडिवो दीटा है कि माइनस दीटा र सम माइनस C1 होतिबो और एठी किछि कांस्टेंट आनिया पय पडिवो जेमति कि दीटा र सम माइनस C2 होतिबो तो मु कोन करबी ना मु x को जस्ट रिप्लेस कर परिबी सम कैपिटल X प्लस सम कांस्टेंट सपोज अल्फा एंड मु y को रिप्लेस कर परिबी सम कैपिटल Y प्लस बीटा मोर dy बाय dx सेम रहइबो कहीं dy को जदि हम देखिबे dy इज इक्वल टू d ऑफ कैपिटल Y हमें जस्ट कांस्टेंट ऐड करूचे कांस्टेंट ऐड करके हमें c1 को एलिमिनेट कर पारे जदि मठी x जगह x प्लस अल्फा लिखिबी अल्फा बीटा वैल्यू केमति कैलकुलेट करबी ऑब्वियसली मु एमति देखिबी जे a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 a1 alpha plus b1 beta plus c1 is equal to 0 and a2 alpha plus b2 beta plus c2 is equal to 0 तो मते अल्फा बीटा मिल जिवो अल्फा बीटा करला परे मु मो इक्वेशन जे जस्ट आको पुट कर देले मोर सिंपल होमोजेनियस इक्वेशन आछि मु कोन कहली सिंपल मते c1 और c2 को एलिमिनेट करे अछि तो आई विल जस्ट स्केल x टू सम फैक्टर लाइक x plus alpha and scale y to some factor like y plus beta. Then I can do the rest of the things and simple पुणी homogeneous आछि सेम जिंसटी कुआइछि एठी सिंपल सेम जिंस कुआइछि कोन कुआइछि जे सेट x इक्वल टू u प्लस h v इक्वल टू तो एठी u आ v वेरिएबल नै अछि मु कैपिटल x स्मॉल x नैथिली dy by dx is equal to dv by du and then solve कर देला पड़े सिंपल अल्फा बीटा को रिप्लेस कर देले एटा और एटा रिप्लेस कर देले सिंपल मु पाई जेबी जे एटा 0 हे जो समथिंग एटा 0 मते कैलकुलेट करियार अछि a1 u तो सिंपल मु पाई जेबी जे dv by du is equal to a1 u plus b1 v divided by a2 u plus b2 v मते लास्ट खाली h आउ के कैलकुलेट करियार अछि तो एटा होमोजेनियस आराम से सॉल्व हो जिवो काहे की सॉल्यूशन आमे एटा काहे की देखुचे जे आर सॉल्यूशन केतेबे एग्जिस्ट करिवो जे एटा भी 0 एटा भी 0 आर सॉल्यूशन एग्जिस्ट केतेबे करिवो जेतेबे a1 by a2 is not equal to b1 by b2 इज ऑब्वियसली दैट इज आवर कंडीशन जहा के हमें ऊपर फर्स्ट लेक्चर हम सॉल्व करिया पे कंडीशन कोन रहला जे a1 by a2 is not equal to b1 by b2 हेतिवो जेतेबे एटा हो तो दिस इज आवर होमोजेनियस इक्वेशन नथिले केमती होमोजेनियस को कन्वर्ट करिया फर्स्ट डिग्री रे आरो केस 2 और केस 3 अछि केस 2 हैला यदि a1 by a2 is equal to b1 by b2 but but a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 माने सिंपल मु कहबे यदि पैरेलल लाइंस रे कोन हला तो पैरेलल लाइंस रे यदि नहीं तो मु कोन कर परिबी ना just a1 by a2 को b1 by b2 को समथिंग m नहीं परिबी then try to solve it in some different methods try to solve in some different methods or the thing is very different method कौन होगा I will आमे देखिबा आगु को different method एठी भी a1x plus b1 है एठी भी a1x plus b1 this is called something like reducible to variable separable आमे सेही मेथड रे आराम से सॉल्व कर परिया व्हाट इज कॉल्ड रिड्यूस केमिति रिड्यूस करिवा गोटे एग्जांपल देखिबा एंड व्हेन द लाइंस आर सेम तो सेम कौन है दिस इज ट्रिवियल ना हमको जस्ट मिल जिवो dy is equal to I dx समथिंग I धर कांस्टेंट आस्थुबो यदि सब रेशियो सेम हैला तो ऑब्वियसली दिस इज अ कांस्टेंट तो मेन केस इज दिस केस 1 सिंपल हमारा आईडिया होची हमको जस्ट कांस्टेंट एलिमिनेट करे दिस इज आवर आईडिया दिस इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस टू होमोजेनियस कन्वर्जन एंड द वेरी इंपोर्टेंट थिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कौन थी वो द फॉर्म इज dy by dx plus py is equal to q linear differential equation रा फॉर्म होची dy by dx plus py equal to q
p ଆଉ q कौन p and q are either constant माने function of x y नथिबो p ଆଉ q रे y टोटली नथिबो तो dy by dx plus py is equal to q dy by dx plus py equal to q p ଆଉ q होची function of x तो आकु केमती सॉल्व करिया जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग जदि मु एठी जस्ट ऑब्जर्व करिवि मु देखिबि जे जदि मु सबु जगह रे बोथ साइड रे मल्टीप्लाई कर देबी e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx जदि मैं एटा बोथ साइड रे मल्टीप्लाई कर देबी e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx मु देखिबि जे एटा गोटे टोटल डिफरेंशियल होला टोटल डिफरेंशियल कोन ना ए पूरा टर्म डाकू मु लिखि परिबि गोटे सिंगल डिफरेंशियल होबे सिंगल कोन लाइक आई कैन राइट dy dx ऑफ y e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx is equal to some q e to the power this तो मु dx जदि एपट को नै गली तो मो पाखरे सिंपल आसीला दुईटा टोटल डिफरेंशियल गोटे हला d of y e to the power p dx आ गोटे दिस इज सम कांस्टेंट काइन एटा इंटीग्रेशन दिस इज फंक्शन ऑफ x into dx तो जस्ट मते बोथ साइड रे इंटीग्रेट करार अछि d of something if you integrate d of something then the result is that something d of x को इंटीग्रेट करले x d of y को इंटीग्रेट करले y तो आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम जदि देखिबा तो हमको मिलेला एटा and k is a constant of integration जमति हमें indefinite integral जमति constant आसे so that is our constant of integration so this is our solving method हमको जदि linear differential equation मिलेला linear differential equation this is the proof केमिति हला solve linear differential equation जदि मिलेला dy by dx plus py is equal to q formula where p and q are function of x or constant तो हमको solve करियर अछि एटा y into e to the power integral of p dx is equal to integration of q e to the power integral of p dx plus k ए जो फैक्टर टा रहिला e to the power integral of p dx e to the power आको कहा जाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहीं कहा जाय ना आपको हमें नहीं कि आगो को इंटीग्रेट तो आपको कहा जाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो शॉर्ट रे हम इक्वेशन हला y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of q into integrating factor dx plus k एटा को मन रखिवार अछि दिस इज रिमेम माने एटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर framed from this you have to remember this y e to the power p dx is equal to q next thing is Bernoulli differential equation is nothing but a reducible to linear equation reducible केमिति suppose given like this dy by dx plus py is equal to q into y to the power some n y equal y to the power n तो आमे केमती करिवा सपोज y to the power n है हमको रिड्यूस करिवार अछि लिनियर रिड्यूस केमती करिवा जस्ट रिप्लेस means replace like v is equal to like this is the substitution some v is equal to 1 by y to the power n plus 1 1 by y to the power n plus 1 why 1 by y to the power n plus 1 कहेंगे ना sorry 1 by y to the power n minus 1 why 1 by y to the power n minus 1 कहेंगे ना हमें सपोज हमको एपटे कोन दरकार कांस्टेंट टर्म हमको एपटे पूरा कांस्टेंट दरकार खाली q तो मु एठी y to the power n नै आसीबी तो एठी कोन हे जो y to the power 1 minus n y by y to the power n is equal to this now जदि मु रिप्लेस कर जदि मु ए जे टर्म ता y by y to the power n आको जदि किछि माने नेमी सपोज t तो मु देखिबे जे dt by dx जो होबो dt by dx will be of this form 1 by y to the power n and this dt by dx will be 1 minus n factor आसीबो into this is the same तो जो 1 minus n constant आसीबो मु ताको both side रे means एपट से मल्टीप्लाई कर देले फर्स्ट टर्म रो मु कांस्टेंट हटे कि एठी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर परिबे काई x रो फंक्शन रे कांस्टेंट मर्ज हे जिवो
तो एठी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सारा परे मते जो फंक्शन टा मिलबो इन टर्म ऑफ v दैट विल बी ए लीनियर टर्म। तो लीनियर टर्म मिलला पर कोन होबो लीनियर टर्म मिलना हमें जस्ट आको सॉल्व करबा देन फाइनली वी विल सब्स्टिट्यूट दिस। तो दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन मे हैपन एंड आगु को आउरी मध्ये किछटा केस एमटी भी क्वेश्चन आस पारे कि हमको सपोज y जगह रे sin y को भी रखिया पय पड़िबो तो ए भया सब्स्टिट्यूशन करी कि वी कैन रिड्यूस टू लीनियर। हमको फर्स्ट थिंग होचे हमें देखिबा लीनियर रे सॉल्व होचे कि लीनियर रे सॉल्व नले वी विल ट्राई टू रिड्यूस टू लीनियर। दिस इज आवर थिंग। सो लीनियर थिंग इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। देन ए फाइनल कांसेप्ट ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। हमें जल्दी पढ़थले टू ऑर्थोगोनल कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ ईच मेंबर व्हिच orthogonal triangle family of curves each member of which cuts the member of given family at right angle। दुईटा family of curves अछि जे कौन से दुईटा कर्व उठे देले से माने परस्पर को राइट एंगल रे कट करथिबे। तो एटा केमति करिबा सपोज हमको गोटे कर्व रो जणा अछि गोटे कर्व जणा अछि सपोज गोटे कर्व किछि भी जणा अछि तार dy by dx रे इक्वेशन अछि। हमें कोन जानि छे दुईटा कर्व जदी इंटरसेक्ट करथिबे तो नेक्स्ट कर्व रो स्लोप टा केते हबो -1 by d तो -dx by dy यदि राइट एंगल इंटरसेक्ट करथिबे। तो फर्स्ट इक्वेशन रे विल जस्ट रिप्लेस -dx by dy -dx by dy को जदी हम रिप्लेस कर दबा जस्ट -dx by dy जदी हम रिप्लेस कर दबा देन जो डिफरेंशियल इक्वेशन आसीयो ताको जदी हम सॉल्व करिवा तो हमें आराम से उठो ऑर्थोगोनल ट्रायंगल पाइ। ऑर्थोगोनल ट्रायंगल क्वेश्चन बेबे आसे नहीं। This is a concept you can remember this and this is very simple just replace dy by dx। This is the main three words only replace dy by dx minus dx by dy। This is the only thing you have to do only this। So and these are our main concepts linear homogeneous variable separable and these are some exact differential। exact माने suppose मो पाखरे फंक्शन देला xy is equal to sorry suppose एमिति देला our given question is x dy plus y dx एमिति देला is equal to e to the power y dy। तो मते कोन करे रचना एते वेरिएबल सेपरेशन न करी मु डायरेक्ट देखि परिबी जे x dy plus y dx को मु लिखि परिबी d of xy। तो मु लिखि परिबी d of xy is equal to e to the power y dy। देन बोथ साइड रे जदि मु इंटीग्रेट कर देबी मु जस्ट पाइ जेबी xy is equal to e to the power y plus c। very simple differential equation। कौन यूज हला exact differential। exact differential is a advanced concept। this is a advanced concept। JEE main रे बहुत कम यूजेस JEE advanced यूजेस करे but if you want to solve question directly like हम exact differential केमति यूज करले इन द linear derivation रे हमें गोटे पाइ गले d of y into e to the power p dx हमें जेमति एटा पाइ गले। तो if you want to just look into the question देखि कि हमें जाना पड़ जे कहार डेरिवेटिव सेमति जदी करियार अछि just you can remember some of this like d of xy d of y by x and d of ln xy ए चारटा मेनली मन रखले चलेबो। tan inverse sin inverse एटा डी डिफिकल्ट है tan inverse sin inverse and you can just remember these four ए चारटा मन रखिले क्वेश्चन सॉल्व हो जो। तो एबे हमें देखिबा किछिटा प्रॉब्लम्स कोन कोन आसीबो प्रॉब्लम्स आसीबो like we are given a function then we will try to do the differential equation for it order and degree then we will use linear we will use homogeneous we will use variable separable। तो केमति सॉल्व करिया हमें भी किछिटा प्रॉब्लम्स देखियो। फर्स्ट प्रॉब्लम the differential equation of the family of curves this is आम क्वेश्चन कोन गोटे फैमिली ऑफ कर्व देला गोटे फैमिली ऑफ कर्व देला हमको कोन करे अछि ना हमको फाइंड करिया अछि डिफरेंशियल इक्वेशन केमति फाइंड करिया। the curve is x square is equal to 4b y plus b। तो हमको कोन करे अछि ना डिफरेंशियल इक्वेशन पई फर्स्ट थिंग कोन we have to remove the constant मु कहितली आ क्वेश्चन रे केतरा कांस्टेंट अछि गोटे खाली b। तो देखिबा जे हमें सब ऑप्शन गुडा सब ऑप्शन रे
1 डिग्री जाए जीवो मैक्सिमम हमको कोन करे अछि 1 डिग्री पर्यंत फर्स्ट डिग्री सॉरी फर्स्ट डिग्री को फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर हबो 1 we have to only go to first order differential because there is only one constant, so this option is direct wrong. As we can see that option is directly wrong kahinki second order differential जदि exam रे देखिबा कि only गोटे option like exam जदि एठी भी option रे दिबा ना तो we can directly mark A as our answer काहेकि ना हम जानछि जे गोटे कांस्टेंट अछि माने फर्स्ट ऑर्डर रु आगु को जिबार ना तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल तो एबे हम कोन करबा we have to just differentiate our पाखरे फंक्शन अछि x square is equal to 4by plus 4b square both side differentiate करबी कोन पाइबी 2x is equal to 4by dash तो एटा गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्शन रे अछि कि 2x is equal to 4by dash नाही हमें कोन पाइबी 2x is equal to 4by dash obviously रहिबनी काहे कि रहिबनी काहे ना ए इक्वेशन रे b अछि हमको कोन करयार अछि ना b को एलिमिनेट करयार अछि तो b को केमति एलिमिनेट करबा जस्ट तो मु कोन पाइली ना 2x is equal to 4by dash माने x is equal to 2by dash मते कोन करयार अछि ना b को एलिमिनेट करयार अछि तो b जगह रे इन प्लेस ऑफ b I can write x divided by 2y dash in place of b I can write x divided by 2y dash a b जगह रे लिखिबे x divided by 2y dash एठी भी लिखिबे x divided by 2y dash तो आपको जदि मैं सॉल्व करिवि आपको जदि मैं सॉल्व करिवि मु देखिबि जे आंसर केमिति आसीबो आंसर केमिति आसीबो जे एट बी जगह 2x by y dash and तापरे 4b square 4 into b square x by 2y dash तो 4 into b 4 into b into y 4 into b केते हबो 2xy dash into y 4 into b into y एटा हला तापरे 4b square 4 into b square 4 तळे 2y रु 4 आस्थियो 4 4 कटला तो दिस इज आवर इक्वेशन जस्ट y स्क्वायर को जदि मैं ऊपर को नहीं जियो देखिबे जे x y dash square into 2y dash is equal to x x y dash plus 2y dash is equal to x so this is our answer so जदि ओटा कर्व देछि how to do differential equation just we have to remove the constant remove the constant जस्ट सेटा करिवार अछि हमको सिंपल कांस्टेंट एते गोटे अछि सेमे फर्स्ट ऑर्डर अछि ठीक अछि सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री वेरी सिंपल क्वेश्चन the degree and order of the differential equation of the family of all parabolas whose axis is x axis कौन कहला डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे तो this question has two things first form the equation like we do in the previous question form the equation then find the degree and the order so first thing parabola parabola ର equation କଣ simple y square is equal to 4x x जदि x axis जहार axis थिबो गोटे parabola ର axis जदि x axis तार इक्वेशन कौन y square equal to 4x किंतु y चेंज हे परिबो ना y सॉरी y काहे चेंज हो ओनली मटी एमिति भी लिखि परिबी y square is equal to y square is equal to 4a x minus b जदि ए भया किछि मो पाखर फंक्शन अछि तो r भी एक्सिस कौन r भी एक्सिस हला x एक्सिस y square equal to 4x plus माने x equal to b रे parabola स्टार्ट होछि तो दिस इज आल्सो द एक्सिस तो मो पाखर केतरा वेरिएबल अछि गोटे a जेटा कि हला तारो मींस दिस लेंथ I means this length focal length then the other thing is b hela kon x रो केते हमें डिफरेंट डिस्टेंस जाइछे तो
दीटा हम पाखरे रहिला वेरिएबल तो ऑर्डर केते हो हम ऑर्डर हला 2 ऑर्डर 2 एबे हम फाइंड करिवा डिग्री हाउ टू फाइंड डिग्री ऑर्डर 2 सिंपल ऑर्डर फाइंड करिया पई देख डायरेक्ट ए भया जेमति से इक्वेशन डायरेक्ट एमति नेला केमति भाबी की ना पाराबोला रो स्टैंडर्ड इक्वेशन को पाराबोला रो स्टैंडर्ड इक्वेशन समस्त को मन थिबो y minus alpha square is equal to means जेटा नॉर्मल पाराबोला रो माने एमती पाराबोला सीधा पाराबोला उल्टा पाराबोला थने अलगा y उल्टा पाराबोला थने x रो स्क्वायर आसी सीधा पाराबोला थने या आसी टेढ़ा पाराबोला थने x प्लस y दीटा को आसी काई एटा हला डायरेक्ट्रिक्स रो आसे एटा डायरेक्ट्रिक्स पाखा एटा डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्शन रे आसीओ तो एटा आसीओ सॉरी x इक्वल एटा डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्शन रे आसीओ एटा जो थी वो सेटा एक्सिस रे आसीओ तो हमको दीटा जिंस अछि हमको टेढ़ा एक्सिस रो पाराबोला दरकार तो हम एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स हमते चेंज कर परियो पाराबोला कोन एक्सिस फोकस फोकस रो डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स रो डिस्टेंस रो रेशियो होला 1 एनी पॉइंट तो मते इक्वेशन कौन मिलवा इक्वेशन इज लाइक दिस y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस x आपको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देबी 2y डैश इज इक्वल टू 4a 2y डैश इज इक्वल टू 4a एंड तो मते सेकंड ऑर्डर जाय जेते पडियो थरे डिफरेंशिएट ले हबन मते h a को भी हटेबार अछि h को भी हटेबार अछि थरे डिफरेंशिएट करले h हटिला तो मते मेला y1 इज इक्वल टू 2a एबे म आउथरे डिफरेंशिएट करबी y1 को डिफरेंशिएट करले कोन हो y1 स्क्वायर प्लस y2 y2 कहीं कि y1 को डिफरेंशिएट करले y2 माने कोन एठी y1 माने कोन y1 माने फर्स्ट डेरिवेटिव y2 माने सेकंड डेरिवेटिव नोटेशन एमके अछि तो y1 इज इक्वल टू 2 है तो आपको डिफरेंशिएट करले एटा हला 0 एक फंक्शन रे डिग्री केते हबो जे भी लिखिबो डिग्री इक्वल टू 2 भेली ता भूल आई मो फर्स्ट स्लाइड रे कहिछि डिग्री इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव केते 2 तार डिग्री केते 1 तो डिग्री हला 1 तो मैं आंसर केते 1 हला डिग्री 2 हला ऑर्डर बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जा पड़ी थी ना हो जा पड़ले जस्ट रिपीट एंड सी नेक्स्ट वेरिएबल सेपरेबल सब कांसेप्ट रो गोटे क्वेश्चन हम देख वेरिएबल सेपरेबल कमति करिया वेरिएबल सेपरेबल सॉल्यूशन टू द कर differential equation which passes through the point A तो एठी फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए हमको जनरल सॉल्यूशन मिलबा ना पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्वियसली हमको मिलबा पार्टिकुलर सॉल्यूशन काहे ना गोटे बाउंड्री कंडीशन देछि जे हम क्वेश्चन दा पास करियो 0 1 यू कैन जस्ट सी परफेक्टली देखाउ छै हम केमति वेरिएबल सेपरेशन करिया 1 plus y square into dy divided by y square divided by y square एटा गोटे पटर रहला नेक्स्ट पटर कोन आस जीवो dx divided by 1 plus e to the power minus x just variable separable now एबे स्किल देखिबार अछि indefinite integration you have to show your indefinite integration skills indefinite integration is not so easy but I think everyone can do these integrations how to do this is the thing केमति लिखली 1 plus e to the power minus x टा जे अछि सेटा कोनटा 1 plus this is no e to the power x divided by e to the power x plus 1 very simple first रो केमति होबो first रो डिफरेंट इंटीग्रेशन केमति this is 1 by y square 1 रो इंटीग्रेशन हला y 1 by y square रो minus 1 by y simple लेफ्ट साइड रो इंटीग्रेशन हेला राइट साइड रो कोन तोटा को मने नेबी t e to the power x plus 1 मने नेबी t तो t dt कोन देखिबी dt आसीबो कोन e to the power x dx obviously e to the power x रो डेरिवेटिव तो dt by t रो डेरिवेटिव ln t जगह ln mod of t obviously mod ln by mod रो तो mod जगह कोन बसे देबी e to the power x plus 1 क्वेश्चन कोन कहला 0 1 रे पास करे 0 1 रे पास करे तुम x इक्वल टू 0 पकेले ए आस जीवो 1 एठी 1 पकेले आस जीवो एठी जदी मु 1 पकेबी एठी आस जीवो 0 तो मु c केते पाइगली c पाइगली मु minus ln 2 हाँ c इक्वल टू minus ln 2
c equal to minus ln2 पाइगली then just c जगह रे पके दबा हमें ln2 तो ln a plus ln b is equal to ln a b समस्त को जଣା थिबो बोधे logarithmic concept revision करिवार अछि ln a plus ln b is equal to ln a b बहुत सिंपल this is simple एटा समस्त जଣା थिबो this is simple then you can just substitute and rearrange option for the answer आसीबो देखिवार अछि 8 + 2 त आसीबोनी +2 त आसीबोनी एटा बोधे आंसर हबो 1 + e to the power x by y हां ठीक अछि this is the answer means जदि मु गोटे सिंपल जिंस भी कहबी गोटे बहुत सिंपल जिंस you can just eliminate these two options ना these two curves doesn't pass through 0 and 1 काहे कि जदि मु 1 पकेबी एठी तो this is 2 is equal to 1 into this is ln1 plus 2 हाँ हाँ oh sorry this also pass एटा ही पास करियो ऑप्शन रो कैंसिल करियो बट sometimes just check the options just once 30 seconds time लागियो एग्जाम रे just check once the options suppose हमको किछटा देछि कि 8 पॉइंट्स रो पास करिवो suppose if you are very lucky if in exam you are very lucky suppose तीनटा ऑप्शन एमते मिल गला जे से पॉइंट थ्रो रे पास करूनी तो जाने click the next option and just go ahead don't need to solve कई एग्जाम रे सॉल्विंग स्किल पचारिबानी somehow you need to get to the answer the thing is mathematics is for every question in maths for every question in maths my general advice is somehow get to the answer somehow you can do variable put करके देखो variable से if formula जाना अछि formula graph draw करके जेमिति हेले आंसर जाय पहुंचो you have options use the options you have options use the options numerical question people what do people लोकाने कोन करंती क्वेश्चन अछि सॉल्व करिया क्वेश्चन सॉल्व कला पर आंसर आसला आंसर करके ऑप्शन में मैच करियो भाई ऑप्शन में मैच करिया सब दरकार है ना यू कैन जस्ट सी द ऑप्शंस फर्स्ट use the options always use the options also in other subjects also in chemistry and physics also you have to use the options next question reducible to variable separable मु कहितली हमें देखिबा what is reducible to variable separable तो केमति हमें कोन होय सेटा reducible to variable separable कोन होय सिंपल जिंस म पाखरे अछि dy by dx is equal to y plus 3x divided by ln y plus 3x plus 3 कर 0 मते देखा होची कोन देखा होची मते देखा होची कि y plus 3x रो फंक्शन अछि this is a function of just y plus 3x somehow if I can switch with something like this y plus 3x is equal to something v मते एठी 3 भी देखा होची मते एठी dy by dx भी देखा होची just differentiate with respect to x respect रो जदी मो डिफरेंशिएट करबी मो कोन पाइबी y रो dy by dx 3x को डिफरेंशिएट करले 3 dy by dx plus 3 is equal to dv by dx केमिति आइडिया आसला ना मते 3 देखा होची मते 3x देखा होची एठी मते y देखा आला dy by dx आरो डेरिवेटिव त मते या देखा जाउची you have to practice and you have to see तो मते y plus 3x को जस्ट v नवार अछि y plus 3x टा को v नले मो इक्वेशन कोन हेला मो इक्वेशन हे जिवो dy by dx plus 3 dy by dx plus 3 मु लिख परिबी dv by dx dv by dx is equal to y plus 3x is v divided by ln v तो कई मते मींस very simple ln v by v into dv is equal to dx स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ln v को t नले ln v को t नले 1 by v dv is equal to dt तो ln v रो स्क्वायर by 2 by 2 टा एप्रोव नहीं जिंदे dx रो इंटीग्रेशन हला 2x plus c है कौन सा 2c को c लेगा किसी असुविधा नहीं v जगह रे मु लिखि देबी a y plus 3x तो मो पाखरे कोन आसीला 2x
by something is equal to 2 extra here. No, I don't think. Yes. 2 ना 2 extra है नहीं. हाँ 280 अच्छी ना. 2x minus this. तो हाँ just c को एपट को नहीं आसले. 2x minus ln v square is equal to c. This is the option answer. That's why you got the idea from the question and solve. How the solution is given? Same. Let y plus 3x equal to t. Every solution will tell you y plus 3x equal to t. How you get to the solution? What is the intuition behind the solution? Solution behind the intuition कौन? दिमाग को आसियो केमती जे मते या करिवार. You have so many formulas. You have so many formulas. How to think that you have to use this formula. कौन दिखार अछि? ना you cannot first thing linear. First କହିଥିଲି ମୁଁ କଣ linear. Can you use linear? No. କାହିଁକି ln y plus 3x ଅଛି ଅଲଗା କରି ହବ ନାହିଁ. ବର୍ଡଲି यूज କରି ହବ କି y to the power n କିଛି divide multiply କରିକି ନା ln ଭିତରେ y plus 3x ଅଛି ଅଲଗା କରି ହବ ନାହିଁ. ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ. ହୋମୋଜିନିୟସ କି ହୋମୋଜିନିୟସ ର କଣ ୟୁଜ ହବ? ହୋମୋଜିନିୟସ ହେଇପାରିବନି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ବାହାରେ ଅଛି ନା. बाहर कॉन्स्टेंट आसेला होमोजेनियस कोड होमोजेनियस भी होबनी. सिंपल वेरिएबल सेपरेशन केमति करिवार छी. वेरिएबल सेपरेशन करिवा हमें देखिबा जे y plus 3x रो 3 अछि, y रो dy by dx अछि. Just use dy by dx plus 3 हला r डेरिवेटिव. यूज द कांसेप्ट टू वेरिएबल सेपरेबल. जेमति इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन रे हमें पुट करथले कि आपको सब्स्टिट्यूट. Just do the substitution, solve the integration, get to the answer. This is the answer for this question. Very simple answer. Next, conversion problem. But before conversion problem, I will do a first order equation. Conversion problem are nothing. You can also do it as a practice. If time permits, I will do it. What is it? You are given some information. Convert the information to differential equation. Convert it to differential equation. Then solve the differential equation to get the answer. This is the solution if you want to see for this question. I'll review it at the last time. First order. Let y equal to yx with the solution of the differential equation xy dash minus y. This. Then हमको information दिया है y of pi is equal to pi. That implies हमको किसी then y dash pi by 2 plus y. ठीक है. What is our equation? Simple. Y dash को अलगा कर दवा. Minus y by x. এটা হয়ে গেল আমাদের is equal to x into x cos x को ମୁଁ ଲେଖୁଛି cx sin x को ମୁଁ ଲେଖୁଛି si sin x. ठीक ଅଛି. ଆମର p कौन? p ଆମେ पाइले p is minus 1 by x. E to the power integration of minus 1 by x dx. এটা कौन हबो? E to the power 1 by x रो integration कौन? 1 by x रो integration as I remember it is ln x minus अच्छी. तो 1 by x तो हमको मिले वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला 1 by x. सिंपल. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 by x. ठीक अछि. इंटीग्रेटिंग फैक्टर केमति काढली जणा पहिला. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होची e to the power integration of p dx. एटा फर्स्ट ऑर्डर जणा पड़छि ना. फर्स्ट ऑर्डर ऑब्वियसली जणा पड़छि काई y डैश अछि, y संगे समथिंग p अछि, एपटे खाली x रो फंक्शन अछि. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मु पाई गेली 1 by x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by x पाइला परे तो मते कोन करियार अछि? मते लिखिवार अछि सिंपल. I will solve here. Let's not look into the solution. मते लिखिवार अछि y into integrating factor is equal to integration of qif dx. q कोन थिला? x into this. हमें गोटे x एटी डिवाइड कर सरछे. आ गोटे 1 by x असला. तो मते इंटीग्रेशन कार करियार अछि? मते इंटीग्रेशन करियार अछि x cos x plus sin x dx. This integration very easy. How to do the integration? You can do it
Means you can do it by parts. This is a very easy thing if you do by parts direct ହେଇଯିବ x cos x ର by parts. If you practice more questions, ଯଦି basic question practice କରିବା, just by observation you can see that this is the derivative of x sin x. माने by parts रे भी same ही आसिବ, cos x ର integration sin x minus sin x आसिବ minus sin x plus sin x ର integration cancel ହେଇଯିବ, then you will just get x sin x. But practice basically direct देखा ଯିବ जे this is integration of x sin x. तो मोर solution कौन है y by x is equal to x sin x plus c. This is my solution. मो पाखरे तापरे कौन देछि y of pi is equal to pi. Y of pi is equal to pi. Y of pi, y by pi is equal to c. Y by pi is equal to x sin x. X sin x माने हाँ y of pi एटा 0 है जीवो, तो y at pi is equal to c pi. तो y at pi कोई ची कौन y at pi is equal to pi, तो मु c पाई गली 1, ठीक अछि c पाई गली मु 1. तो मोर आंसर फंक्शन कोन हला y is equal to x square sin x plus x. कौन करियार अछि, you have to find y double dash. Double dash you can easily derivative x square sin x रो double derivative करले कोन हबो, double derivative करले हबो 2x sin, first derivative 2x sin x plus x square cos x, double derivative जहां भी हबो you can just get to the answer somehow. So these are first order derivative. What to do, just first step identify, then calculating the integrating factor, then just do integration, use the formula, do integration, very easy. Another one, first order, you can see first order 2x by x plus 1 is p, this is p, e to the power minus 2x is q, some boundary given. This is for practice. This question is for practice. I have added this question. दुईटा क्वेश्चन सॉल्व करियार किछि माने नै फर्स्ट ऑर्डर तो this is for practice. You will also do some increasing decreasing behavior, revision of previous class, differentiation, application of derivative, maxima, minima, increasing decreasing. तो कौन करियार अछि, just you have p and q, r integration simple देखा अछि कोन e to the power p dx about 2x plus ln x. Just do it. E to the 2x plus ln x काहे के अछि, e to the power 2x plus ln x असले फायदा कोन हबो, फायदा हबो कि जते एठी मल्टीप्लाई करबा 2x minus 2x कर जिवो. Every question is easy, question is given so that you can do easy things. The question is solving method, if you are solving it is getting too long, then you are in the wrong track. E to the power 2x plus ln x, e to the power minus 2x कटि जीवो आराम से, e to the power ln x कते x as जीवो only x dx जीवो x square by 2. तो y by e to the power 2x ln x, y sorry y I x, y into e to the power, तो मु पाई जीबी y is equal to simple x square divided by 2x ln x, or x square divided by e to the power 2x plus ln x. It is simply this x square into 2x into x. Ja ei bhala kichi asibo. This is for the practice. I will not do it. My main thing is first do a homogeneous question. How to do it is a homogeneous. Is this homogeneous? Did I miss? Sorry, this is not a homogeneous question. Probably I put the same question twice. No worries. I will get you to a homogeneous question. I'll just practice a homogeneous question. Suppose question is given as you have to do homogeneous, like dy by dx is equal to xy square plus y cube divided by x cube plus x square y. This is homogeneous of degree 3. How to do? You have to put y is equal to vx. If you put y equal to vx, what is dy by dx?
dy by dx is v plus, if I take v constant, then I will get v. If I take x constant, I will get x dv by dx is equal to y equal to vx. So I will get v square plus v cube, I think. Sorry, no. Y equal to vx, na? So I will just get v square x cube plus v cube x cube divided by x cube plus vx cube. X cube कटिଯିବ. This is the use when it is given homogeneous. आमे देखिबा कि y equal to vx नेले आमे just पाइजिबा variable separable रे केमती एठी एटा रहला x dv by dx is equal to ऊपर तय मु देखिबी जे v square common n 1 plus v कटिजिबो मु पाइजिबी v square minus v माइनस v टा एठु गला और एटा को मु v square जदी कॉमन नै कि लिखिबी v square कॉमन नै कि लिखले दिस इज 1 plus v. So this is variable separable. I think you all can solve this. Just write dv by v square minus v is equal to dx by x. V square minus v केमती integration होगा? V square minus v रे integration केमती होगा? How to do dv by v square minus v? dv by v square minus v is v square minus v को लिख परिए v into v minus 1. ऊपर अच्छी 1 को मैं लिख परिए v minus 1. Then just do by the कौन कॉल है? जहाँ भी कॉल है. I don't remember the exact term's name. Just understand the feelings of this question. If you integrate this, you will get ln v minus 1 by v is equal to ln x cx. Got a constant with us one integration. Now just replace v is equal to y by x, y equal to vx, then we get the solution. A type रे homogeneous question हमें solve करता है. तो हमें different type रे question देखले variable separable homogeneous first order. This is a practice of first order. This is a bit tricky. Why? This is also a practice. This is a first order. The hints for you is this is a first order and linear. Among that simple integrating factor wala question. This is an integrating factor wala question. But trick is here the equation is dx by dy. Very tricky मैंने exam रे जाना पड़नी. आमा general equation कौन था? dy by dx plus dy is equal to q. This is our general thing ना. But in this question, when you try to solve equation asibo dx by dy plus px is equal to q, where p and q are functions of y. If you solve it, you will get some equation like this. Just see a simple देखिवा. तो एठी कौन हबो? आमर आंसर कौन है जीवो? x e to the power p dy. Just y को x संगे रिप्लेस करिवार अछि ना. Is equal to integration of q into integrating factor into dy. Now you can solve this. Just use dx by dy instead of dy by dx. And this is not homogeneous. This is the same conversion problem. Given the slope of a tangent to a curve at any point is this. Slope of the tangent to a curve माने कौन? dy by dx. Slope of the tangent to a curve mu previous class रे कहइतली slope of the tangent to a curve is dy by dx. So dy by dx is 2y by, so this is variable separable. Just solve the equation and put the boundary condition. Passes through the center of the circle.
ए सर्कल रो सेंटर केते सेंटर मते जदी जणा पड़ची 1,1 मते हां सेंटर इज 1,1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेंटर जदी एटा थिबो -2x तो 1,1 सेंटर इज माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy तो सेंटर इज माइनस g माइनस f माइनस g जहां भी सही बोला सेंटर तो दिस इज द सेंटर यू कैन आल्सो सॉल्व दिस तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मेन थिंग होची you have to do first thing is you have to check for integrating factor वाला linear रे होची कि नहीं linear रे जदी dy by dx रे होनी then check करिवा dx by dy रे होची कि नहीं फास्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करियो हम चेक करिवार गोटे क्वेश्चन देले हम फास्ट चेक करबा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला रे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला रे dx by dy वाला रे सॉरी फास्ट सबुटे जी वेरिएबल सेपरेबल देखिनवा ना वेरिएबल सेपरेबल होची कि नहीं कि होमोजेनियस कि नहीं जेउडा हम नोन फॉर किछि जदि नोन नथिला देन ट्राई टू रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूस टू होमोजेनियस रिड्यूस टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जेटा कि बर्नोली हम कहचे रिड्यूस तो रिड्यूस करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर परिया सिंपल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस लाइक दिस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिड्यूसिबल आ बाहरो आउ क्वेश्चन आसीबो ना these are the main things in differential equations thanks sir finished सर हो गया